from being connected and waiting for the next session to begin, right? Okay, so here we go, the Swiflearn platform that says that we try harder. So what does this mean, that we try harder? Yes, guys, it means that the teachers here are working harder with the students so that they can have better scores in their life. Isn't it? Isn't that good? Now teachers are also working. Yeah, it's not that they're just giving the instructions to the students. Okay, you go do these questions, do that, do this. No, they are exactly working hard with you, finding out different questions, different ways to deliver and teach to you and come back prepared. Like they're preparing and coming back to you with more of preparation. Isn't that great, guys? Yes, so hi everyone, good afternoon. You can say good afternoon, ma'am. Hi in the chat, I'm there with you. Yes, meanwhile, I'll tell you what is this platform Swiflearn and what do we teachers do here. Alright, तब तक हम इसके बारे में बात करते हैं और तब तक आप सारे जल्दी से आ जाओ और हाय हेलो करके एक दूसरे से बातें कर सकते हैं हम चैट्स पे, राइट? ओके, सो हियर वी गो विद द फर्स्ट वन. इट सेज दैट इट इज 100% लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लासेस. व्हाट मीन्स, जैसे मैं अभी आपके सामने लाइव हूँ, यू कैन चेक, कमेंट करके चेक करो मैम लाइव पे है नहीं. ओके, सो द मोमेंट यू विल चेक दैट आई एम देयर लाइव. सिमिलरली जब आप इस प्लेटफॉर्म में इनरोल करते हो, जब यहाँ से पढ़ना लगते हो, तो एक टीचर यहाँ पे लाइव आपके पास होती है और वो आपको लाइव समझाती है. सो इट्स नो प्री रिकॉर्डेड सेशन. जो बच्चे लोग इनको बाद में देख रहे हैं और उनके पास कोई डाउट्स होते हैं तो वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे टीचर लाइव प्रेजेंट होती है और आपसे डाउट्स क्लियर उसी टाइम पे आपके डाउट्स को क्लियर करती है. ऑलराइट, और डाउट्स क्लियर करने के लिए डिफरेंट क्या है, वो तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं. हाँ करते हो, बट दूसरे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बच्चे होते हैं. जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे में 30-35 बच्चे होते हैं क्लास में, राइट? बट एट दिस प्लेटफॉर्म वी ओनली टेक मैक्सिमम ऑफ 6 स्टूडेंट्स. तो 6 स्टूडेंट्स से ज़्यादा बच्चे हम एक बैच में नहीं रखते, जिसकी वजह से जो टीचर क्या है वो हर एक स्टूडेंट पे ईजिली कॉन्सेंट्रेट कर सकती है. इजंट दैट ग्रेट? है ना? तो फर्स्ट क्लास में ही पता चल जाएगा. ओके, सपोज रोहन है, रोहन आपकी मैथमेटिक्स में एडिशन तो बहुत स्ट्रांग है, सब्ट्रैक्शन उससे भी बढ़िया है, बट क्या होता है जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आते हो तो आप मिस्टेक करने लग जाते हो. तो ये जो डिफरेंस जो रोहन के बारे में टीचर को पता चलेगा वो फर्स्ट क्लास से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे ही नहीं है ना? तो हर एक बच्चे की हर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकर पॉइंट्स हम इजिली देख सकते हैं, राइट? नॉट ओनली दिस, यहाँ पे टीचर ही सिर्फ आपका प्रोग्रेस नहीं देखती, यहाँ पे एक मैनेजमेंट टीम है. कौन सी टीम है? एकेडमिक मेंटोर टीम. एक टीम है जो आपका सारा वर्क ट्रैक करती है. इस टीम का काम ये है कि जब आप आते हो ना फर्स्ट ट्रायल क्लास में, तो आपका लेवल देख लेते हैं. ठीक है, आपका लेवल पता चल गया, सपोज इस हाइट पे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? तो इस हाइट पे है, बट इससे ज्यादा भी तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, राइट? कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इससे ज्यादा हम इम्प्रूव कर ही नहीं सकते. कभी भी ऐसा होता है? नहीं ना. लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने के चांसेस होते हैं. तो यही टीम आपको ओवरऑल क्लास वर्क, आपका होम असाइनमेंट्स जो हम आपको होमवर्क देते हैं, आपका क्लास के अंदर रिस्पॉन्ड करना, आपका क्वेश्चंस पूछना, ये सब कुछ मॉनिटर करती है. जब ये सारे एस्पेक्ट्स मॉनिटर करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि बच्चे ने प्रोग्रेस करी या नहीं करी, उस टीचर के साथ बच्चों को कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली. Alright, so there is a academic mentor team that keeps a track of works of students progress, और आपके प्रोग्रेस बताती है कि नहीं देखो आपने पहले से इम्प्रूव करा है या फिर आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. Alright, we also cover syllabus as per school exam schedule. So एग्जाम से पहले प्लीज हमें बता देना और हम आपको पढ़ा देंगे. सिंपल एज दैट. यस, तो जो भी आपका स्कूल एग्जाम है उससे को जब भी होता है आप हमें बताओ, हम उसको सारा सिलेबस कवर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा नहीं होगा कि हम अपना ही पढ़ाई जा रहे हो, स्कूल में कुछ आना है वो हमने पढ़ाया ही नहीं. नो, तो जो भी आपका स्कूल एग्जाम होगा आप उससे पहले बताओगे, हम वो वाला एरिया और वो वाला टॉपिक जरूर कवर करके और उस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे. Alright, so that you get good score in your school exams. Not only this, we also handle custom requests. So custom request का मतलब ये है कि जो भी बच्चे टॉपिक से बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो आप चाहते हो हम वो भी पढ़ाते हैं. सपोज मैं 8th में हूँ बट मुझे 9th की प्रिपरेशन पहले करनी, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें बता दो, हम 9th के टॉपिक्स भी आपको पढ़ाएंगे. इसके लिए ही कस्टम रिक्वेस्ट हैंडल हम करते हैं. तो जो आप चाहते हो टॉपिक्स जोन जोन से पढ़ने, हम वो बोले टॉपिक्स भी आपको पढ़ा सकते हैं.
So it's just up to you what you want to study. तो जब सब कुछ आपके हिसाब से है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस के हिसाब से है, स्टूडेंट के बारे में है, उसकी एजुकेशन के बारे में है, all of these factors makes India's most sincere learning destinations. Yes, Swiflearn is known for its sincerity throughout the world, and that is why it's known as India's most sincere learning destination. A sincere platform in which a student when enrolls get a higher score, and that is for sure. Guarantee देते हैं. All right, so here we have classes from 1 to 10. So we teach all the students from grade 1 to 10. You can go and enroll for a free trial class, guys. So जो भी मैम कह रही है उसको चेक करने का एक तरीका है कि फ्री ट्रायल क्लास में जाओ और चेक करो कि मैम ने जो जो ये बोले हैं वो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. एंड इफ यू थिंक दैट इट इज सेटिस्फाइड देन कम बैक टू दिस वीडियो एंड कमेंट दैट yes ma'am you were right. And if you think that no, there were some of the areas that ma'am said which was not covered, so then also you can come back on the video and comment us. We'll get back to you and understand what is the area in which the teachers can improve more. तो आपके हिसाब से टीचर इंप्रूव करेगी? Isn't that great? Yes. So let me remind you some more key features which were already there. So let us discuss again. डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट. एक प्रोग्रेस रिपोर्ट एक स्टैटिस्टिक्स जैसा ग्राफ आपके पैनल पे दिखेगा जो कि आपको बता सकता है कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं. इवन इफ इट्स अ ड्रॉप, क्योंकि ह्यूमन है, गलती होना नॉर्मल है, राइट. सो ड्रॉप हुआ तो इट्स अ रेड अलार्म, टन टन टन. सो नाउ टीचर हैज टू वर्क हार्डर सो दैट द स्टूडेंट कैन गेट गुड मार्क्स एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक इन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वे. Alright, isn't that great? Yes. Also, there is Swiflearn Academic Set Series that is known as SATs, which is done on the global, so all over the world. पूरी कंट्री तो है ही इंडिया की, वर्ल्ड से भी बच्चे इस एग्जाम में अप्लाई करते हैं, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपने कितनों को बीट करा है और कितनों से अहेड हो. क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चा जब भी आप देखोगे तो जॉब्स में सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं होते, पूरे वर्ल्ड से लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. एंट्रेंस एग्जाम किसी चीज़ का होता है उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग करते हैं, राइट. तो जब उन सबसे कम्पीट बाद में भी करना है तो क्यों ना पहले से ही तैयारी कर लें. So that is why we have SAT exams in which you can go and do it and prepare yourself and compete with other students and know your progress. Okay? अगर आपको ये चीज़ करनी है और उससे बेटर रिजल्ट आने तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. Simple है. And that is why we have come up with a system that says we give you unlimited practice tests. So it's up to you how much do you want to practice. Hi Sehal, how are you? Great. So there is unlimited practice test where you can go and practice, keep on doing the questions as much as you want and they will be checked also. तो ऐसा नहीं है कि practice करी जाओ कोई check ही नहीं कर रहा. No, each and every test that you give is checked at the system and returned back to you that what is the area you need to improve and what is the area which you have already improved. Okay? Now we also have subjective test exams. So बच्चे ये तो हमने बोल दिया practice test है. तो practice test अब आता है कि मैम practice test कैसे होंगे, है ना. तो प्रैक्टिस से सब्जेक्टिव होंगे और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे, जहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप उसमें सॉल्व करके एक ऑप्शन क्लियर करके टिक करोगे. और सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट्स के अंदर जहाँ पे आपको स्कूल एग्जाम की बात आती है तो आपको प्रॉपर रिटर्न देना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता, राइट. मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो दैट इज वाई वी गिव यू प्रैक्टिस ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ओके. टेस्ट तो होगा आज. yes you will have a test. Today we have a quiz. Okay, no tests, quizzes. Stay tuned. Okay. Yes, so here we come. Kindly go and subscribe to the YouTube channel, press on the bell icon so you're never ever late. All right, so आप लेट नहीं होगे और हमारे पास सेशन में टाइम से आ जाओगे और उसके बाद हमारे क्विजेज में और ऑनलाइन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करोगे. Great. Okay, so here we go with the topic that says expansion. हम expansion का सेकेंड कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम्स करेंगे. There will be quizzes, subjective and objective both, और आपको उनमें से हमें आंसर्स देने होंगे कैसे करते हैं. Ready guys? Ready for the quiz? Yes, so objective is concept based questions and subjective questions. हम दोनों करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब्जेक्टिव करेंगे. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग स्टूडेंट्स. हम कहते हैं कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो एक सैम्पल है, देखो हम करवा रहे हैं. और ना ही सिर्फ यूट्यूब पे, यही सब कुछ आपको विदाउट हमारे प्लेटफॉर्म जो होता है स्विफ्टलर्न प्लेटफॉर्म पे अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे भी मिलेगा. ऑलराइट. ओके, ग्रेट. सो हियर वी गो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लास्ट सेशन में थोड़ा सा एक्सपेंशन, थोड़ी सी हमारी आइडेंटिटीज मिस हो गई थी जो हम नहीं कवर कर पाए थे. तो फर्स्ट लेट्स कवर दैट एंड देन वी विल प्रोसीड. ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. तो एक्सपेंशन ऑफ x plus a
इंटू एक्स माइनस ऑफ बी। तो गाइज हमें इसमें हमेशा जो स्कूल में या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में, मैं नेम नहीं लेती एग्जैक्टली स्कूल में, कभी भी कोई टीचर कहती है ना तो हमारे को ये आइडेंटिटीज दे देती है, राइट? और वो कहती है इनको लर्न कर लो, यही बोलती है ना। बट इनको लर्न करने का तरीका क्या है? मगअप करना पड़ेगा क्या? मगअप करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हैं। सो हियर वी कम विद द टेक्निक दैट मेक्स यू लर्न इजीली। तो सिंपल क्या है, इस एक्सपेंशन करने का तरीका सी क्या है, उन्होंने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा, व्हाट यू गेट एक्स स्क्वायर। लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा, व्हाट यू गेट ए बी। क्लियर? और बीच में जो ए और बी है उनको लिखा और एक्स से मल्टीप्लाई करा। दिस इज द वे यू कैन लर्न। ऑलराइट, अब ये तो आ गया जब हमारा क्या है, दोनों पॉजिटिव है। अब जब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉर्मल है, हम सब कंफ्यूज होते हैं। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए बचा क्या है, हमने दूसरे को नेगेटिव रखा। अभी हमने क्या किया था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर वो एज इट इज आ गया, राइट? दूसरे में हमने क्या था, a इंटू बी, तो a इंटू अब नेगेटिव b से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, राइट? नेगेटिव a भी आ गया, सिंपल। अब क्या है हमारे पास बचा, क्या है, a बचा है माइनस b रखा है, तो उनको ब्रैकेट में रखा और x से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू टेल मी, अब मुझे सच्ची में कमेंट में बताओ कि अब ये याद करना मुश्किल है? अब इस आइडेंटिटी को आपको लगेगा कि मुझे याद नहीं हो रही मैम, कितना मुश्किल है? एनीवन हु थिंक्स दैट स्टिल इट्स अ प्रॉब्लम? या आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इज इट स्टिल अ प्रॉब्लम नाउ? Do you think it's a problem now to understand? No, right? Yes, that is what this platform is all about. तो आपको हर एक पॉइंट पे लगेगा कि ये चीजें आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ लर्न करने के लिए देते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने दे देते हैं। That is what we tell you, how to learn, how to revise. ये चीजें जो कोई नहीं सिखाता, हम वो भी आपको सिखाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। Alright? Okay then. Now moving on to the next one. Let's see. So now the next identity comes जब दोनों ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो क्या है, पहला तो x इंटू एक्स है, एक्स स्क्वायर रहेगा। नेगेटिव साइन को बाहर रख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम है, तो नेगेटिव रख के बीच में a प्लस बी आ गया। अब नेगेटिव a इंटू नेगेटिव बी क्या बनता है, पॉजिटिव ए बी। सो दैट इज व्हाट दिस एक्सपेंशन इज ऑल अबाउट। क्लियर गाइज? ओके, नाउ मूविंग ऑन कि अगर हमारा फर्स्ट जो है वो नेगेटिव हो, सेकेंड जो है पॉजिटिव हो, सिंपल x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। पहला नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हमने बाहर रख के a माइनस बी कर दिया, सिंपल है। इसको x से रखा और a माइनस ए इंटू बी करके माइनस ए बी कर दिया। इफ यू वांट, अगर आपको लग रहा है कि इसमें भी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस करके, इधर हम क्या कर रहे हैं, माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ बी इंटू एक्स एंड माइनस ऑफ ए बी, ये भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ही तो यही है ना। तो इट्स जस्ट द वे टू लर्न। अगर आपको पहली आइडेंटिटी आती है तो सेकंड जो भी आइडेंटिटी आप उसी रूल पे कर रहे हो, कोई भी फर्क नहीं है। बस आपको साइंस जो है वो नेगेटिव को एक एज अ नंबर इंटीजर नेगेटिव को पूरा ले लेना है, ठीक है? उसके बाद वही पॉजिटिव वाली अप्लाई करो और सिंपल है आइडेंटिटीज लर्न करना। तो एक आइडेंटिटी करके जो 4 हमने उसको डिराइव करके लर्न करने की कोशिश करी है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ वन आइडेंटिटी लर्न करो और ऑल द 3 आर सॉर्टेड। इजी? Okay, so now there is also expansion of a plus b plus c. अब क्या था, अभी तक तो हम 2 आइडेंटिटीज को प्लस कर रहे थे, a प्लस b का होल स्क्वायर देख रहे थे। बट अगर 3 आइडेंटिटीज को प्लस करना हो और उसका होल स्क्वायर निकालना हो तो व्हाट डू? वी डू लाइक a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीनों को अलग अलग स्क्वायर लिखा, प्लस इंटू 2 ऑफ पहले दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 से, फिर दूसरे दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 से, और फिर फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सिंपल एज दैट, आइडेंटिटी लर्न हो गई। अगर अभी भी प्रॉब्लम है, आई विल टेल यू ये आया कहां से, ठीक है? a प्लस बी को सिंपल एक टर्म लेके c से हमने अलग कर दिया, तो इसमें क्या आता, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? इधर आता ना। फिर हमने क्या करा, a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दिया, तो इससे हमारा ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाता है, सिंपल। तो इसी चीज को उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, सेकंड में सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके 2 से कर दो, और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके 2 से कर दो। सिंपल? क्लियर? ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट सेज, अगर हमारा जो है c नेगेटिव हो जाएगा तो सिंपल एज दैट, सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि c का क्या है, माइनस ऑफ c का स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर, राइट? तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जहां पे भी हमारे पास c है ना गाइस, हम सिर्फ वहां पे उसके आगे नेगेटिव रख देंगे। तो देखो a b है तो पॉजिटिव है,
C है तो नेगेटिव कर दिया, C है तो नेगेटिव कर दिया. दिस इज हाउ वी डिराइव द नेक्स्ट योर आइडेंटिटी. क्लियर, इजी. सो हमने सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी लर्न करनी है और दूसरे में उसका रिलेशन समझना. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अगर अब हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आती है दैट इज कि अगर हमारा बी नेगेटिव हो तो सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. बी जहां पर होगा वहां पे हम नेगेटिव कर देंगे. यहाँ पे बी आइडेंटिटी है, ओके, बी माइनस लगा देते हैं. यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ बी नहीं है तो नेगेटिव नहीं लगाते. सिंपल. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जब दोनों ही नेगेटिव हो. अब क्या केस में हो जाएगा, जहां पर बी है वहां भी नेगेटिव, जहां सी है वहां भी नेगेटिव, बट जहां पे बी सी है वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. ये चीज है बस, और इसी पे ही पूरी आइडेंटिटीज वर्क करती है. क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. राइट, गिव मी अ थम्स अप प्लीज. Okay, so here we come with the properties and a question that says that we have if a plus 2b plus c is equals to 0, we need to find the value of a cube plus 8b cube plus c cube. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सी गाइस, मुझे ये बोला हुआ है a plus b 2b plus c is equals to 0. ये चीज दी हुई है. ओके, मैंने किया given is this. This is how is the subjective question solved. So you can look at the steps what is required so that you don't lose marks in the exam. All right. So if a plus 2b plus c is equals to 0, that means a plus 2b is equals to minus of c. ये c इधर चला गया, नेगेटिव हो गया. राइट, अब मेरा आंसर किस में है? क्यूब में है. क्यूब में है ना, तो मुझे क्या करना होगा, हमें होल क्यूब करना पड़ेगा. So what am I doing? I am taking cube on both the sides. That becomes a plus 2b's whole cube is equals to minus of c cube. So अगर मैंने उनका क्यूब कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, a plus b whole cube becomes a cube plus b cube plus 3ab a plus b. करा? This is what we have done. Now what we have to do is we will expand, but expand करने से हमारा b square के अंदर वैल्यू आ जाएगी. Right? So what do I do is a cube plus b cube प्लस 3 इंटू 2b. जहां पे a भी आता है उसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू क्या आती है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आई है माइनस ऑफ c. तो माइनस ऑफ c कर दिया आपने, तो उसको आपने c लिख दोगे. राइट, सो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ c. तो जब हमने उसकी वैल्यू लिखी एज a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ c, व्हाट डू आई गेट? आई पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन एंड आई गेट द आंसर. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट आई हैव डन. a to the power 3 plus 8b cube is equals to 3 into a into 2b into c, that is equals to minus of c cube. ये हमने कर लिया. इजी. जब हमने ये चीजें करी तो हमारे पास क्या आया, a cube plus 8b cube plus 6 into abc is equals to minus of c cube. अब नेगेटिव को यहाँ ले गए और ये -6 जो है वो यहाँ आके पॉजिटिव हो गया, बिकॉज इट वाज माइनस है. ये साइन मिसिंग था जिसकी वजह से ये चीज क्या हो गई, नेगेटिव. ये नेगेटिव यहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ आके हो जाएगा पॉजिटिव. एंड दिस इज हाउ वी गॉट द आंसर. क्लियर गाइस? क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, a प्लस 2b वॉज इक्वल टू माइनस ऑफ c, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा. ऑलराइट, सो जब हमने ये वाला पुट करा और उस पे मेरा आंसर हमने इसको देखा तो आया -6abc. नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ वी गेट द आंसर एंड दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर इन द स्कूल एग्जाम. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. देयर आर स्पेशल प्रोडक्ट्स. अब ये स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सो स्पेशल प्रोडक्ट्स आर दैट x इंटू a प्लस x इंटू b प्लस x इंटू 3. तो जब मुझे ये चीज करनी है ना तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है. राइट, हम सब डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, बट नाउ एट दिस प्लेटफॉर्म वी विल अंडरस्टैंड. सपोज मेरे को आइडेंटिटी नहीं याद तो मैं कैसे उस पे आती हूँ, वी विल अंडरस्टैंड दिस. ओके, इन केस यू फॉरगेट इट एंड यू डोंट नो हाउ टू डू इट, सो वी विल टीच यू दैट ऑल्सो. ऑलराइट गाइज, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इज, फर्स्ट वी विल ओपन दीज टू ब्रैकेट्स. हमने x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का जो आइडेंटिटी अभी याद करी थी तो क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी, और उसके बाद हमने x प्लस सी करा. अब x प्लस 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, पहले x को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज व्हाट वी हैव डन. वी हैव डन x क्यूब प्लस x a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस ए बी एक्स, राइट। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, सी को मल्टीप्लाई करते हैं हर एक से, सो दैट बिकम्स सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू सी एक्स प्लस ए बी सी। क्लियर, हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब हमने क्या करा, जो एक्स स्क्वायर्स की टर्म है उनको इकट्ठे, जो एक्स की टर्म है इकट्ठे, और जो इंडिविजुअल ए बी सी है विदाउट एक्स उसको एक साथ ले लेते हैं। ओके, तो एक्स क्यूब तो एज इट इज आ गया, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। सो व्हाट डू, आई टेक एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन, सो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज एक्स एंड दिस इज विद द एक्स। तो हमने क्या करा, इसके अंदर हमने एक्स को यहाँ पे करा ए सी, ठीक है, बी सी और ए बी, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इंटू एक्स, और ये एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी अलग ले लिया। सो इससे मेरे पास इस आइडेंटिटी को ओपन करके मेरे पास क्या डायरेक्टली आंसर आया, मेरे पास डायरेक्ट आंसर आया कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी। दिस इज हाउ आई गॉट दिस आइडेंटिटी। ऑलराइट, इन केस आपको लगता है कि मुझे आइडेंटिटी नहीं आती, मैं भूल गया हूँ, तो डोंट वरी, आप इसको एक्सपैंड करके भी आंसर लेके आ सकती हो। नो टीचर विल से इट्स रॉन्ग, इंस्टेड यू आर परफॉर्मिंग 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग ऑन टू एक्स प्लस ए बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी हमारे पास और है, विच सेज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ये वाली होगी, और जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, राइट, और ये पॉजिटिव रहेगा। बट जब यहाँ नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, और ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ द साइंस। क्लियर, सो इसी को ही हमने याद करना है कि हमारी रिलेशंस में क्या चीजें हैं, और हमारे को जब एक याद हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली हमें इजीली याद हो जाएगी। जो जहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर गाइस, सो हियर वी कम ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। Now we also have a property that says a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So जब मेरे पास ये पूरा टर्म है वो आता है, कैसे आएगा, जब मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ, राइट। तो मेरे पास आता है a प्लस बी प्लस सी। अभी तो हम ए बी की बात कर रहे थे, सी टर्म नहीं आ रहा था, तब तक हमारा यही चल रहा था। द मोमेंट आई गॉट सी क्यूब द टर्म हैज इंक्रीज, नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ 3 वेरिएबल्स, राइट, 3 टर्म्स है। तो इन दैट केस इट बिकम्स a प्लस बी प्लस सी, ऑलराइट, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, that is equals to a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. This is what you have to learn. Alright, so this identity you have to learn. और इससे एक हमारी exceptional case या बहुत easy way है कि जब भी मेरे को a plus b plus c मैं चेक करती हूँ, alright, अगर ये 0 है तो that means ये left hand side क्या हो जाएगा, सारा 0, 0 multiply by anything is 0. That means अगर if a plus b plus c is equals to 0, that means a cube plus b cube plus c cube is equals to, what will it come, a cube plus b cube plus c cube minus 3ab है, which is equals to, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 0. Now I can take this on the other hand, I get a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. So this is what the property that we will be using in lot of questions जब भी हमारे पास यहाँ पे ऐसे क्यूब्स आएंगे. So now see, now what we are teaching you is कि किस टाइप के क्वेश्चन स्कूल्स में आते हैं. As a teacher, I know when I'm preparing questions कि मैं कौन कौन से questions prepare करूँगी. Right, so this is also I'm telling you that these are the favorite questions or these are the questions जहाँ पे बच्चे ज़्यादा mistake करते हैं और teachers वो ही pick करती है check करने के लिए आपको concept आया या नहीं. So this is one of the question that is regularly asked in the school exam, and how is it asked, we'll come to the practical way of solving it. Okay, so here we go. You have to use the property and evaluate 8 cube plus and minus 6 whole cube plus and minus of 2 whole cube. So guys, how can you do this? Yes. Okay, so here I know a is equals to 8, b is equals to minus of 6, c is equals to minus of 2. If I know a plus b plus c is equals to 0, that becomes a cube plus b cube plus c cube is equals to
3abc. This is what I know. So a plus b plus c whole is equal to 0 का जब प्रॉपर्टी निकाली तो इन सब का आंसर क्या आ गया? 0. सिंपल. अब 0 आ गया तो मतलब इन सब की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 3abc के. So I know this will be equals to 3 into a is 8 into b is minus of 6 into c is minus of 2. Anyone who can give me this answer, what will it be after solving? Yes, what do you get after solving? 8 into 6 into minus of 6 into minus of 2. Yes, guys, what's the answer? Waiting for your answer. Let me see how many people are attentive with me, how many students are giving me the answer. Yes, so I know minus minus gets positive. So now I'm left with 3 into 8 into 6 into 2. So on solving, what do you get? Yes, guys, so what's the answer? You get 288. Superb. Well done. That's the right answer. Okay, moving on to the next question that says minus 10 cube plus minus of 10 cube plus 20 of cube. So simple as that, we'll say a is equals to minus of 10, b is equals to minus of 10, c is equals to 20. So if a plus b plus c becomes minus 10 plus of minus of 10 plus of 20, that becomes 0. So a plus b plus c is equals to 0. That becomes a cube plus b cube plus c cube is equals to 3 into a into b into c. So what's the answer, guys? 3 into minus of 10, multiply sign, multiply by minus of 10, multiply by 20. So what do you get? 6,000. Superb. That's the right answer. I think we have got the right answer. Let us see. Yeah, the first answer is 288. That was great. And the next is 6,000. Superb. All right. So did you know what's happening around? How did we get these algebraic values using words and not letters? Do you know this? Yeah. This is a person who invented that in 780s to 850 AD. So that was so much before, done by Abuja. So he's the person who's behind this. He was the one who first wrote about the algebraic expressions. All right. Wasn't that great? Did anyone tell you who did it? No, we don't know that. So now it's coming up with this other platform where we tell you how was it invented and how early the man was smart enough. So kitne pehle hi bana liya. They were so smart and intelligent enough that they knew that this would be used. And if I say this would be used, right? So where it be used? Any idea? Okay, go and search it and we'll come back with the next topic, which would be where are these algebraic things used? Okay, so let's start with the concept-based questions. So first one, the question is 9x plus 1 by 4y is upon whole square. What was the property that we'll use, which is the identity that we are going to use in this question? Anyone who can tell me? Yeah, so it's 9x plus 1 by 4y whole square. So we are using the identity of? Yes, a plus b whole square. So what's the identity? A square plus b square plus 2ab. Superb. Great. So what is here? A here? A is 9x. Yes. B is 1 by 4 of y. Very good. So let's put that value in this equation. So 9x whole square plus... Akshadeep, hi. How are you? Let's come and solve the question. So it's a quiz time. Let's see who can give me this answer beforehand. Before me solving, who's smarter enough. Let's see that. Okay, so on solving, what do you get? What's the answer, guys? Yes, so 9x becomes 81x squared plus 1 by 16y squared plus, so let's cancel this. This becomes 2, so 9 by 2xy. So this is what I got the answer. Do you all got the same answer, guys? Let's see who can give me the answer now. So if you think that it's difficult to type, so you can type like this, okay? In this, you can write 81x2. So I'll understand that's 2. Or if you want, you can also use that 81x and you have this like an arrow in the number system. So that means upon. So that is also used in mathematics. That says upon when you're using with the keypad, okay?
So this is the way you can type and give me the answers. All right, so let's see, have we got the right answer? Super, we got the right answer. Okay, moving on to next one. Who will give me this answer now? 7x minus 1 by 4y whole square. So which identity are we going to use? What is it? I'm stuck. Anyone can guide me? Yes, let me see who will help me out. कौन सी identity use करनी है इसके अंदर? It says a minus b whole square. Very good. What is it? A square plus b square minus of 2ab. Very good. So what is the answer? Who got the answer? Let me see. Anyone who can give me the answer now? Yes, it is 7x square plus 1 by 4y square minus 2 into 7x into 1 by 4 of y. So what is the answer? 49 x squared, good, y squared by 64 minus 7 by 2xy. So I suppose I've got the right answer and I did not do any silly mistake. Let me check. So here we go. That's the right answer. Superb. Great. So let's be a little more quick, okay guys? Now next time you have to give me the quicker answers. So now it comes that you have to prove that this left hand side is equal to right hand side. Any idea how can we prove it? Yes. Simple. We will use the property a plus b plus minus of c whole square here, and we'll use the property a plus b plus c whole square here. Right? Do we know the property? Yes. So what is it? First, let's understand the identity. So a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Alright, but here what will I use? I'll use a plus b minus of c whole square identity. Right, and what is that? A plus b minus of c whole square. See, we have learned today a trick, right? Wherever c will come, I'll put negative and c square at the positive. Simple as that. So a square plus b square plus c square will remain same. Okay, यहाँ पे c नहीं है तो 2ab रहेगा. यहाँ c है. Okay, minus 2bc. यहाँ पे भी c है, minus 2ca. So this is what the identity is, right? This is how we have learned. Yes. So what I'll do is I'll say first we have to prove this. So first let me take the left hand side. So LHS is equals to, what will I write? 10x plus 5 by x minus 1 whole square, which is equals to, I'll use this identity and put it in the reasoning using a plus b minus c whole square is equals to, you'll write the whole identity in the box. Alright, now you will explain 10x whole square plus 5 by x whole square plus 1 square plus 2 into 10x into 5 by x, right, minus 2 into 5 by x into 1 minus 2 into 10x into 1. Alright, so on doing this, what do you get? You'll get here 100x square. Okay, let me change a different color so that I get a space. Becomes 100x square plus 25 by x square plus 1. Here x and x gets cancelled. That becomes 100 again. Minus 5. Okay, 2 by, it's 10. Sorry, 10. Let me erase it. Yeah. So that is 2 into 5. That is 10 by x minus 20x. Right? Now I know all are different. So there is no common one so I can solve. So I'll remain this. This remains the left hand side. Moving on to the right hand side, I'll say RHS is equals to this. Using this property, and I'll expand. Alright, the moment I'll expand and solve it, I'll get this one. Hence, when I know LHS is equals to RHS, hence proved. Simple as that. Clear, guys? Okay, super, great. I'm very happy that you can understand. Now, moving on to next one. Let's see who can give me the answer quickly. So, you have to expand and find the value of 100 of square minus of 98 square. Who can give me this answer? Yes.
if we have to use it, we can, okay, say 100 square, then we can find 98 into 98, then subtract. So you have to, but it's saying expand the following and find out the value. So I have to use the expansion method and get the answer. So how can I do this? Okay, if I take A is equals to 100 and B is equals to 98. So what property are they wanting? What identity they want me to use? They want me to use A square minus B square. Do I know what is A square minus B square equals to? Yes, it is A plus B into A minus B. Simple as that. Okay. So what is it? A plus B into A minus B? Yeah. So one way I can do is I can say 100 plus of 98 into 100 minus of 98. This is what I want to say. 100 plus 98 becomes 198 into 100 minus 98 becomes 2. So on multiplying, what do I get? I get the answer 396, and that is what we have used the expansion. And the reason you have to give this is very important, that you are using this identity and then solving it, and this is how I have got it, where A is 100, B is 98. All right, clear guys? Yes, great. Moving on to the next question. Okay, first let's check the answer. Have we got the right one? Yes, we have. Great. Moving on to next one. Find the value of x squared minus of 98 squared to the whole square. Now, is it a problem? Yeah, it becomes a squared minus b square's whole square. Now, what to do? Anyone who can help me in this question? How will I do this? Okay, anyone who can say, yeah, we can do it some other way also, or we can have to proceed the same way that you are doing the first question? Yes, if we want, we can use this first way. So first I can say, let me calculate the value of a square minus b square. This we have already done in the first question. I got the value of, it is 396. Yes, everyone, we got this before. How did we got this? Because we used the identity that says a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. For the latecomers who have joined right now, here's how that we have solved this question. Okay, so it says that we have taken a as 100, b as 98, and we have used this identity and got this answer. Okay, so substituting the values, multiplying, and we got this. Now on getting this, you got 396 whole square. Now, how do we get 396 whole square? It is saying that you have to evaluate, but we know we cannot do directly. So in this question, can I say that I can write this as 400 minus of 4 whole square? Will this mean the same? Yes. So on this, what do I get? A minus b whole square. That becomes a square, that is 400 square plus 4 square minus 2 into 400 into 4. This is what I'm using, because I'm using the identity a minus b whole square is equals to a square plus b square minus of 2ab. That's it. All right. On using this, what do I get? I get here 6 double zeros, 1,60,000. Is it that right? Okay. Plus 16 minus of 3,200. On solving, what do you get, guys? Anyone who can give me the answer on solving, what will you get? Yes, let me see who is there and solving with me and can give me this answer now. Yes, what's the answer, guys? The right answer is, yes, that's right. It's 1,56,816. That's the right answer, and you should get this on solving it. All right, great. Now, moving on to the next question. It says, if a plus b is equals to 10 and ab is 21, we have to find out the value of a minus b whole square. Now, I know a plus b. I know ab, but they want me to find out the value of a minus b whole square. So how can we do it? Anyone who can tell me? Yes, anyone who can help me out in this? Okay, so let's move on with a plus b whole square. Simple as that. What is that? A square plus b square plus 2ab. This is the identity that I know. Here a plus b is 10. So let's substituting the value becomes 10 square is equals to a square plus b square plus 2 into 21. Right. So here we come, a square plus b square is equals to 100 minus of 42. Am I right? Okay. What do you get a square plus b square as?
You get a square plus b square as 58. So just take this as equation 1. I got one value. All right. Now what they want me to calculate, they want me to know a minus b whole square. So what is the identity that says a minus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab, right? I know the value of a square from equation 1. I know the value of ab, which is already given in the equation. Can I substitute and know the answer? Anyone who can give me the answer now? Let's see who can give me the answer. A plus b, here I know using the equation 1 is 58 plus 2 into 21. So what's the answer, guys? Yes, anyone who can solve this and give me? It becomes 58 plus of 42. That's right or not? Yes, that is, but we'll use a negative sign. I forgot that because it's a negative. A minus b, and this is negative. So we'll subtract and not add it. All right. So that's it. You remember the signs and use the property Presley, and here we go. We got 6 and 116 should be the answer. Because a minus b whole square is a square plus b square minus of 2ab. And now I know the value of ab, that is 21. 58 is already there. We'll subtract and we get the answer as 16. Let's see, have we got the right answer or we have still made any mistake? That's the right answer. Easy. So जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना गाइस, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, कैसे हमें उससे चलना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस क्वेश्चन को हम एक्सपैंड करते हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? मतलब कि अगर मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए और ab की तो ऑलरेडी पता है, तो मैं इजिली ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ. As simple as that. So let's move the opposite way. Whenever we are stuck, this no one will teach you, only this platform will teach you. So kindly go and subscribe to the channel, press on the bell icon so that you don't have to find the video again और आपको ये चैनल भूल ना जाओ, right? So एक बार सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, yes, this was the platform and these were the teachers here which are telling us something which is how to proceed the question. डायरेक्टली तो हर कोई बताता है, बट कब स्टक होते हैं और कब कैसे करना है वो कोई नहीं बताता. एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म विल टेल यू वेयर यू आर स्टक, जहाँ पे आपको जरूरत शुरू होती है वहां से ये प्लेटफॉर्म आपको पढ़ाना शुरू करता है. इजंट दैट ग्रेट नाउ? Yes. So a minus b whole square is a square plus b square and minus of 2ab, right? I always do that. Yeah, minus of 2ab. On doing this, what do I get? I should know the value of a square plus b square. अब a square plus b square की वैल्यू मैं a plus b से निकाल सकती हूँ. कैसे? क्योंकि जब मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो मेरी एक्सपेंशन आ जाएगा a square plus b square plus 2ab, राइट? तो इससे मेरे को ये वैल्यू मिल सकती है एंड दिस इज हाउ आई एम रिलेटिंग द क्वेश्चन. तो मैं कहती हूँ ठीक है, मतलब ये चीज यहाँ से आ सकती है, तो क्यों ना मैं यही पहले कर लेती हूँ. So here I am substituting the value, getting the answer of a square plus b square, then substituting in the another identity and then getting the answer a square minus b square. This is how we plan the question and then proceed. All right? Okay. Moving on to the next one. Let's see who all can give me now. It says 2a upon 7b plus 7b upon 2a whole square minus of 7a upon 2b minus 7b upon 2a whole square minus of 45. What is the answer? Anyone who thinks, मैम ये तो a b के अंदर टर्म्स में बात कर रहे हैं और आंसर पूछ रहे हैं, तो टर्म्स में ही आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कैसे आएगा? वन वे यू कैन, यूल से मैम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, a प्लस बी लगा लेते हैं, a माइनस बी लगा लेते हैं, उसके बाद करते हैं. ठीक है, वी कैन डू दैट, बट हाउ टू मेक इट क्विकर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर जल्दी आंसर आ जाए, तो व्हाट डू आई नो? I can say, okay, let capital A is equals to 2A upon 7B, right? Let capital B is equals to 7B upon 2A. इसका मतलब क्या, मैं क्या यूज कर रही हूँ? A plus B whole square minus of A minus B whole square, something like this. मुझे ये चाहिए. A plus B whole square minus A minus B whole square की जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? We get 4 into A into B. This is what I get. कैसे? We can see that. See, if I say a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab माइनस करते हैं a minus b whole square. ठीक है, दिस इज व्हाट वैल्यू नीड. तो माइनस हो जाएगा a square. ठीक है ना, पॉजिटिव है बट माइनस करेंगे, राइट? सो लेट मी पुट द नेगेटिव साइन नीचे, बट है तो ये पॉजिटिव ही, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. माइनस 2ab, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल,
4ab आ गई मेरे पास वैल्यू. This is what I have used directly. So 4ab है. So now what do I know? Using this identity, it becomes 4 into 2a upon 7b into 7b upon 2a minus of 45. So 7b कट जाता है. A 2a कट जाता है. What is the left? 4 minus of 45. So what do I get? 4 minus 45 minus 41. So here we go with the answer. उसको expand करना और फिर complicate करने से पहले already हम वो चीजें variable से solve करके निकाल सकते हैं, right? And we can directly solving in 3-4 steps we are able to do it. So we are just telling them that we are using the identity that says a plus b whole square minus of a minus b whole square, that is 4ab. As simple as that. So you will not lose mark as you have already mentioned the reason. Alright, so that's the right answer, minus 41. Moving on to next one. Let's see who can give me this answer. So it's just based on the same thing that I have taught you before this. Let's see whoever are there with me and can you give me the answer or not. Yes, let's see. So what will be A now? Capital A would be 6a upon 13 of b. Capital B will be 13b upon 6a. So what do I know? Capital A plus b whole square minus of capital F A minus of capital B whole square is equals to 4 into A into B. So which applies by solving these two all together, I'll get equals to 4 into 6a by 13b into 13b upon 6a minus of 10. Simple, these gets cancelled. So what is left? 4 minus of 10. So what's the answer, guys? 4 minus 10 is minus 6. Pretty easy, right? So let's see, have we got the right answer or not? That's the right answer. Super. Great. Okay, now coming on, you have to finally express these identities and expand it. So is it easy now? Can you all do it? So what does its property says? A minus b whole cube. So what is it? A minus b whole cube is equals to? A minus b whole cube is equals to a cube minus b cube minus 3ab a minus of b. Right? This is what it is? Yes. So can anyone solve and give me the answer? What will it be? On solving, what do you get? So let's put a is equals to 9x and b is equals to 1 by 8 and expand it. Right? So what do I get? 9x whole cube minus 1 by 8 whole cube minus 3 into 9x into 1 by 8, and let me give a bigger bracket, a different one, okay? 9x minus 1 by 8. This is what is the question. On solving, you can get the answer. Isn't that easy? Yes. So on this, what will you get? 9 cube, you'll solve it. You'll solve 1 by 8 cube, and then on this, you can solve and multiply and get to the expansion. Similarly, in this, what expansion will you use? You'll use a plus b whole cube. That becomes a cube plus b cube plus 3abc a plus b. Yeah, that is what? Oh, sorry, there is no c. I wanted to make a bracket. Yeah, 3ab a plus b. Easy? Yes? Okay. So this is what the next expansion is. On this, when you will solve and you will get the answer of the next question. Right? Okay, so let's see what is the answer. Have you got the same answer or not? So it's 81 square cube minus 243x square by 8 minus 27 by 64x minus of all the numbers. Summing to here, all are positive because that the rule is. So we'll get everything as positive, and that we go. Here is the answer. Clear, guys? Isn't that easy now? Yep. Okay, super. Moving on to the next question, it says that if a plus 1 by a whole square is equals to 25, we have to find out the identity that says a cube plus 1 by a cube. अब इस क्वेश्चन को वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द लास्ट क्लास. अब लास्ट सेशन में अगर आप गए थे तो आपने लास्ट में 15-20 मिनट्स देखा होगा, तो हमने यही करा था इस क्वेश्चन को. आई एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश एंड देयर वाज अ डिमांड कि आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दो मैम, तो मैंने वो भी करा था. एंड दिस इज व्हाट वी विल यूज नाउ. सो एनीवन हु कैन टेल मी कैसे करना है? यस, इट्स a plus 1 by a whole square is equals to 25. So if I mean अगर ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a plus 1 by a. So what do I get? Plus minus of 5, right?
अब मेरे पास प्लस भी है और माइनस भी है, दो वैल्यूज आ सकती हैं, बट इन द केस इट्स गिवन a is greater than 0, we'll take a positive, and in the case it's not given, we'll suggest that let's see what the value will be, right? So here what will you do? You'll say that okay, it's greater than 0, it should be greater than equal, not equal to 0, okay, and it should be greater than 0. So हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी दी हुई हो तो हम इसके अंदर a की वैल्यू क्यों क्या ले लेंगे, we'll take it as 5, and if this is not given then we'll take two values and solve it separately and then we'll get the two answers. All right, so let's see how to proceed. So it's a plus b, a plus 1 by a whole cube, it is a cube plus 1 by a whole a cube plus 3 into a plus 1 by a. This is what the property is. This is what the identity is that we are using. I know now this becomes 5. So let's using 5 as a single one first. It becomes 5 cube is equals to a cube plus 1 by a cube plus 3 into 5. This is what it is. So now moving it on the other hand will be a cube plus 1 by a cube will be 5 cube minus of 3 into 5. Yes, guys, this is what will be. What is 5q? Anyone who can tell me the answer? What is 5q? Yes, I can see you guys there. What is 5q? It is 125. Very good. Minus 5 threes are pretty easy. 15. Yeah, that's right. On subtracting, what do you get? You'll get 110. So this would be the answer when you will take 5a plus 1 by a is equals to 5. Positive. But when you take it negative, what will happen? Just simple as that. Let me change the color and tell you this will be negative and this will become positive. So it will be minus 125 plus of 15. So instead of solving, you will get minus 110. So answer remains the same. So you have positive and negative both. All right. So that is what the answer is. Let's see have we got the right answer or not. So that's right. It's a positive answer given to you. But if you take a negative value, you get the negative one. So that depends कि question में हमें दिया हुआ इसकी value not equal to 0 ये बताया हुआ है, but greater than less than नहीं बताया, तो in that case we will find two answers. All right. Okay, so now using the property and evaluate these questions. So we have done just one of them and you can already see the answer. But still, anyone who can tell me how to proceed? Yes, which property are they talking about here? They are talking about the property that says if a plus b plus c is equals to 0, that implies a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. This is what they are telling us. This is the property that they want us to know. Yes. So now what is the a value? It is 25. B value is minus of 10 and C value is minus of 15. So adding them, what do you get? So when you add A plus B plus C, you get the answer 0. That means we can use this property directly. That means 25 cube plus and minus of this 10 to the power of 3 plus and negative 15 cube will be equal to 3 into 25 into what will be minus of 10 into minus of 15. So on this, when you will solve, you will get this answer because negative negative becomes positive. So 3 into 25 into 10 into 15. So here we go, comes 11,250. And that is what we have used the property. We have mentioned that. And mentioned in the question that I'm taking A is equals to 25, B is equals to minus 10, C is equals to minus 15. Now by adding all of them, A plus B plus C, I get the answer 0. Therefore, I'm taking the property that says if this is equals to 0, A cube plus B cube plus C cube is equals to 3ABC. So writing this identity in the exam and the reason is very important. Otherwise, you can lose marks for that. All right, guys. Okay, so that's it. Moving on to next one. Anyone who can solve this and give me the answer quickly now. Let's see. I don't think I need to explain so much. We have already done this today. So anyone who can give me direct the answer. Yeah. So what is it? A is 50, B is minus 20, C is minus 30. So I know A plus B plus C becomes 0. So A cube plus B cube plus C cube is equals to 3ABC. What is it?
A cube plus B cube plus C cube is equals to 3ABC. Now I know it's 3 into 50 into minus of 20 into a minus of 30. Anyone who can give me the answer? I think it's very easy, isn't it? Yeah, its calculation is easy. So negative negative becomes positive and it is 90,000. So let's see. Have we got the right answer? Yes, that's it. So we got the right answer and that is 90,000. So that's it for today. We have learned the concept-based questions. We have understood the subjective questions, how to write, what is the reasoning. And we have also studied कि कभी question में हम अटक जाते हैं, we don't know how to proceed, so we can imagine and look क्या चाहिए and we can go back. इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए क्या चाहिए होगा, and then going on top and starting the question which is not taught on any other platform. Okay guys, that's it for today. Thank you so much for being connected for the whole hour. It was a great time with you and a lovely experience altogether. Now, don't forget to subscribe to the channel, press on the bell icon so that you will get to know when I'm coming up with the new topic and new things. So, हम आपको नहीं बता रही. I'm not telling you when I'm coming next. If you have to catch me or you have to find me, then you have to subscribe this channel, press on the bell icon, and then you'll get the update on your own, the timing and the day when I'll be coming up with the new topic, a new one, a new chapter, or just the next one. Let's see. That's a surprise for you guys. So for that, you need to press on the bell icon, especially because then only you'll get the notification. All right, I hope you enjoyed the session, you had fun, and you were able to understand some of the things which was not told or explained to you before, and you had those problems. All right, guys, thank you so much for connecting. Take care and be safe. Bye.